जय हिंद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य जयन्तु तत्सवे सर्वेभ्यः शुभाशया। भीमराव अंबेडकर बाबा सत तुम्हें प्रणाम। भारत की पावन गाथा में अमर तुम्हारा नाम। माता श्रीमती भीमाबाई, पिता राम मेलो सकपाल। 14 अप्रैल को आया था उनके घर धरती का लाल। आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान। कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए हैं। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। आज हमें इस विचारधारा पर चलना होगा, तभी देश में एकता आएगी। उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों तथा गरीब लोगों के हित के लिए कार्य किया। आरजेएस पीबीएच के शैक्षणिक वेबिनार में आज 14 अप्रैल 2024 को हर साल हम लोग ऐसे अम्बेडकर जयंती मनाते हैं और हर रविवार वेबिनार करते हैं। आज इस मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं ऑनलाइन, मैं सर्वप्रथम नाम लेती हूँ प्रोफेसर अभिजीत के चटुराज जी का, जो डीन है एसडब्ल्यू एंड एसएस प्रोफेसर एंड चेयरपर्सन। आपका इस मंच पर सर अभिनंदन है। अब मैं सीईओ प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कनवास जी, जो आज के चीफ गेस्ट हैं, प्रफुल्ल डी सेठ जी, जो हमेशा हमारे सीबीएच और आरजेएस के वेबिनार में हर रविवार उपस्थित रहते हैं, उन सबों का मैं अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि मन्ना जी ने भी बतलाया कि हम लगातार हर रविवार आरजेएस वेबिनार से जुड़ते हैं और अब तो हम ये ग्रंथों में आने लगे हैं, पुस्तकों में भी आने लगे हैं। और एक आरजेएस परिवार एक सकारात्मकता की बात लेकर इतने दिनों से ऐसे मुहिम आंदोलन चला रहा है। और आपसे भी ऑनलाइन जुड़े अतिथि हमारे समूह का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर बीना जैन जी की, जो इस मंच पर आमंत्रित हैं अपनी ओपनिंग रिमार्क्स के लिए, जो उज्ज्वला विमेन्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन है डॉक्टर बीना जैन जी। थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बस मैं आज ये 2-4 बातें कहना चाहती हूँ कि आज हम 19वीं बैठक कर रहे हैं, ये वेबिनार कर रहे हैं पॉजिटिव इंडिया पे। और ये इश्यूज हम इन पे हम ऐसे इश्यूज लेते हैं जो हमारी सोसाइटी, हमारे भविष्य, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, एजुकेशन लैंडस्केप इन इंडिया इज कॉलिंग फॉर ए चेंज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन हमारी कंट्री में है, मगर बहुत तरह से एक तो इतनी एक्सपेंसिव है और क्वालिटी की कहीं लैकिंग कर रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी पहले मिस्टर बिजॉन मिश्रा जी का और प्रफुल्ल सेठ जी का, जो इस इशू को लेकर के कई वेबिनार कर चुके हैं और करने जा रहे हैं। क्योंकि लगातार अगर हम इस इश्यूज पे काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को सक्सेस मिलेगी। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि एजुकेशन ऐसी चीज है जिसी से हम अपना भविष्य, हमारे अपने देश की तरक्की तो हो रही है, मगर इसमें हमारे, क्योंकि बच्चे जितने भी बहुत क्रीम निकलती है वो बाहर चली जाती है। हमें सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि हमारी जो जनरेशन बहुत काबिल है, जो बाहर जाके अपनी सारी काबिलियत को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दूसरी कंट्रियों में जाने को दे रही है, वो व्हाई नॉट हमारी कंट्री, हमारी इंडिया में क्यों नहीं कर रही। इस तक हमें पहुंचना चाहिए। और आज मैं इस बात का बड़ी सबसे बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस जितने भी हमारे स्पीकर हैं बहुत ही वेल नोन है, बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, और ये वेबिनार से हम कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। मगर मन्ना जी से मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहूंगी कि हमें थोड़ा सा यूथ को इसमें जोड़ें ताकि वो इसको समझें, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम ये प्रोग्राम करते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक होता है कि डायरेक्टली हमारे स्पीकर, हमारे इतने काबिल होनहार स्पीकर्स अगर उनको वो सुनेंगे
तो उनको रजिस्टर होएगा कि हमको ये चेंज लाना है और हमको ये करना है। तो मैं इसी पे ये कहना चाहती हूँ कि आगे भी हम दूसरे एक इशू पे उज्जवल की तरफ से 21 को हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, महावीर वैल्यूज, क्योंकि महावीर की वैल्यू थी कि जो नॉट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर अदर जो आजकल डॉक्टर्स भी बताते हैं और हम फॉलो भी करते हैं, उसको हम इस प्लेटफॉर्म पे हम उसको डिस्कस करेंगे और हमारे अच्छे वक्ता हैं जो इसको बताएंगे और हम इसको स्प्रेड करना चाहते हैं। मन्ना जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इस मंच को उन्होंने खोला ताकि हम जनता तक पहुंच सकें और ऐसे लोगों तक पहुंच सकें जो इस भाषा को समझते हैं और आसानी से इस तक पहुंच सकते हैं। उनको कहीं भी किसी हॉल में या किसी भी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज बिजॉन मिश्रा जी एंड प्रफुल्ल भाई जी से मैं ये बहुत शुक्रिया करती हूँ उनका कि वो इस माध्यम से बहुत जनता तक पहुंच रहे हैं और अलग अलग वेबिनार में अलग अलग इशू ला रहे हैं, मगर जो आपने एजुकेशन को जो पकड़ा है वो उसकी सक्सेस जरूरी है और मस्ट है, वो जरूर हो। धन्यवाद। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं एक श्लोक के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ मुक्षे गमय, बृहदा बृहदारण्यकोपनिषद। अर्थात हे ईश्वर, हमें सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अब मैं इस वाणी को अपनी विराम देते हुए, जो आज इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के विशेषज्ञ प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा जी को आभासी माइक्रोफोन सौंपती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, संचालन के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस ढंग से शुरुआत किए हैं। पुष्कर बालाजी फ्रॉम जमशेदपुर, हम बहुत ही गौरव महसूस करते हैं जब हम कभी भी कोई भी व्यक्ति जो जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं उनसे मिलते हैं, क्योंकि वो जगह हमारा जन्म स्थल है, और नमस्ते। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आपसे हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अभी भी हम अपने बर्थ प्लेस से कनेक्टेड हैं आपके थ्रू से, तो बहुत अच्छा लगता है। और धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया रूप से शुरुआत की है। आई वुड फर्स्ट लाइक टू congratulate and acknowledge RJS परिवार for holding this webinar every Sunday without fail at 11 o'clock. It has become like a religion to us. It is now no less than 219th episode which we are doing, and as we have agreed that we will continue to do it till 2047, whether we are there or not, but we would definitely like to institutionalize this platform in a manner कि हम लोग सब इसके साथ जुड़ जाएं। और जैसे हमारे प्रिय मित्र टीना जैन जी ने बताया कि यूथ को इन्वॉल्व करना चाहिए, which is very important. And as you know that India is the largest kind of a shelter for the youths of the country. आज हमारे देश में more than 35% of the people in our country are youths. So it is very important that we focus. I want to take this opportunity to acknowledge जो उदय मन्ना जी ने कहा कि it is international, because two people, ardent loyalists of ours, they invariably join at the midnight of USA with us. And we have got Professor Ramaiya and Rajan Verma ji, both of them, they join, and welcome to both of you for staying awake so late to join us. I really feel very proud and I feel very delighted when I see both of you joining this conversation
every Sunday at 11 o'clock India time, but from your respective places at around midnight or past midnight. So thank you. I want to acknowledge all of you. Of course, we have got two very eminent people who have joined us. One is Dr. Virendra Kanwar, who is the CEO of National Accreditation Board for Education and Training. Professor Dr. Virendra Singh Kanwar is the CEO of a vertical of Quality Council of India, which focuses in building quality and developing standards in the area of education and training. Welcome, Dr. Saab, for taking your time. I thought we will connect with you in your car, but I can see you are in the room. So I'm very happy that you have joined us at a stable place, and we will get to hear you in a short time. So thank you for joining us and agreeing. Next is our Professor, Chattaraj. Professor Chattaraj, as we fondly call him, Abhijit, has been a great kind of an academician, especially focusing on insurance. My interaction with him has been very brief, has been very short, in sense that we met each other only 2 years back when we signed an MOU between Consumer Online Foundation and BIMTech to create a center of excellence in insurance sector and move forward. So we are working together on that, and I'm very happy that he is also joining us on a very important conversation on bringing reforms in the education sector. I also want to congratulate the Aware Consumer team, which brings out this publication. I can see Payal has joined us, who is the consultant editor, and she is the person who researches, gets in touch with the person whom we carry as an eminent person to take an interview for the magazine. We carry opinions of people who are very important to us. And I also want to congratulate all his team members like Venkat, Ibrahim, who help her to bring out this publication every month without fail, on the dot, on the 1st of every month. And I'm sure you all must be observing, from the time we started in 2016, it has never failed that date, even once till now. So they definitely need to be congratulated and recognized for the great work they are doing. I want to thank all my readers of the magazine. जो जिनको मिलता है मैगजीन, जो इसको खोलकर पढ़ते हैं, हम उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मतलब I would say obliged and indebted that आप लोग हम लोग को encourage कर रहे हो, जिसके चलते हमारी टीम भी encourage हो रहे हैं और इसको हम लोग हर महीना निकाल पा रहे हैं on some important issue concerning the consumer. Now let me tell you, as a person who comes from the consumer perspective, and I have been working on the empowerment of the consumers in India and also globally for the last 40 years. Today's topic is very important, and I would like to keep a short thought here before we move forward to listen to the chief guest and the keynote speaker, and then open the conversation to many important people who have joined us. I can see several names of friends of mine who have joined, and they are eminent in their field, whom we are waiting to hear, like Mr. Sridhar Reddy, like, we have Professor Pramil Tiwari ji, many of you. I mean, it will take a long time for me to introduce everybody, but I'm sure all of them will come one by one to share, my good old family friends of RJS Parivar, Ishaq Khan ji, everyone is here. You see, I feel very proud when I come on a Sunday to meet all of you. The topic says, what is the reform? Dekhiye, reform always, badlav always happens for the good. बदलाव का जरूरत होता है क्योंकि लाइफ इज डायनेमिक, स्टैटिक, रुकता नहीं है, लाइफ चेंज होते रहता है,
टेक्नोलॉजी आ रहा है, सोच विचार बदल रहा है. Similarly, education also in India needs to have a drastic reform. हम drastic इसलिए कह रहे हैं, I am using this word because I feel that somewhere in education, जैसे बीना जी नेक्स्ट वीक महावीर जी का वैल्यूज लेके एक डिस्कशन रख रही है. What I want to tell you all is education has to be driven to a large extent through spiritualism. You know, we have to accept the fact and respect the fact that education is not only cramming books, memorizing certain formulas, and sitting for a test and getting a degree. In my view, education is much beyond all that. It is actually helps in creating a foundation within you to respect values, respect spiritualism, respect the ethical lifestyle which we all need to adopt. And a developed country is only defined not only by economic power and should not be defined by economic power, because in my view, economic power is only one of the indicators. The most important indicator is your value. How do you value the time of yours and others? How do you value good governance? How do you value in terms of ensuring productivity? How do you value in terms of ethical practices? Because for me, everything is science. See, जब लोग बोलते हैं कि हम आर्ट्स पढ़े हैं, I always argue with them saying, नहीं, आप आर्ट्स नहीं पढ़े हो, आप साइंस भी पढ़े हो. Because even an artist is a scientist. This is my thinking. And a scientist is also an artist, let me tell you. जो मेडिसिन डिस्कवरी कर रहा है, उसके अंदर में भी आर्ट है, वो भी आर्टिस्ट है. So there is nothing called science and arts. It is only what we need to understand is that we need to make data credible. We have to make evidences, because if you don't create evidences, then people will never believe you. And in order to create evidences, we have to make sure that we document. हमको याद है, हम उदय मन्ना जी से कई बार बहस की है इसको लेकर कि आप इतने अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आप डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हो. आप जब तक डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, आपका अच्छा काम हो जाएगा, लोगों तक पता नहीं लगेगा आप क्या किए. और हमको बहुत खुशी है इस बात से कि he has not only brought out one edition, now he is bringing out the second edition to document all what RJS Parivar is doing, the positive media is doing, the family members are doing from the time we started. So I would like to close here by saying, जो हम रेगुलरली हमारे क्लास में जब हम टीच करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के साथ बहस होता है, कई बार लोग हमको बोलते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ मतलब डिबेट करते हैं कि सर आप तो खाली इम्प्रैक्टिकल चीज बोल रहे हो, आप केवल किताबी बात कर रहे हो. तो हम उनको ये समझाते हैं कि भाई, किताब लिखने वाले अपने अनुभव को जब प्रिंट में डाल देता है और एविडेंस के साथ डालता है, सबूत के साथ डालता है, तो वो एक प्रैक्टिकल किताब बन जाता है. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड कागजी. कागजी को लाइव करने के लिए हम लोगों को प्रैक्टिकल होना अनिवार्य है, हम लोग को एविडेंस क्रिएट करना अनिवार्य है, हम लोग को सबूत इकट्ठा करना अनिवार्य है, और पब्लिक के साथ जाकर, पब्लिक के सामने जाकर उसको रखकर उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, ताकि वो फिर से इंप्रूव हो, जिस पे हम लोग और बात कर रहे हैं आज कि व्हाई वी आर गोइंग थ्रू अ चैलेंजिंग टाइम, दैट इंडिया नीड्स रिफॉर्म्स in the education landscape in the country. So without wasting any more time, I would like to first call upon the keynote speaker,
Professor Abhijit Chattoraj, who is, as I explained to you, a very eminent academician. He teaches in BIMTech. You see, in Noida, I have visited his institute, and he's a thorough academic person, let me tell you, which means he is always in favor of creating evidences. His publications are many, and he is very well known. Without spending any more time, I would like to call upon the keynote speaker. I would urge the keynote speaker and the chief guest to stay on to answer questions from our participants, because I would like that we should have a lot of interactive discussion in today's topic with all the people who have taken a Sunday at 11 o'clock to join us, leaving aside the family. परिवार को छोड़कर उन लोग ज्वाइन किए हैं, कुछ लोग परिवार के साथ ज्वाइन किए हैं, तो हम फिर से उन लोगों पे आभारी हैं कि वो लोग ज्वाइन किए और इस चर्चा में भाग ले रहे हैं. तो प्रोफेसर अभिजीत चट्टोराज, please, the mic is yours. We are impatiently waiting to listen to you and your message to us, that what is the way forward that change should occur in India to take us to our next level, to become the #1 country in the world. Abhijit Chattoraj. Thank you so much. Wonderful. Good morning, everybody. It's a very august audience. Am I audible, I believe? Yes, you are. Yeah, you are. We can hear you. Thank you, Professor Misra, and thanks for the opportunity given to me. It gladdens me. The topic is close to my heart. I come from the same state from where Professor Misra comes. I come from Ranchi, and I have never had the occasion to go to good schools. My father was in civil service, yes, and we moved from one place to another place, and we were, in those days, dumped into government schools. And I did my matriculation from Jilla School. But I have no regrets. In fact, I always believe that whatever opportunity, wherever you get, and if you are able to seize those opportunity, everything pays in the long run. Educational landscape in India is calling for a change. Yes, indeed, it calls for a change. Not everything is hunky-dory, but not everything is bad. Government of India has been taking serious steps to revamp everything, and I'm sure in days to come, things will look better, much better than what it is today. The recovery has started with NEP 220, and in days to come, if the execution takes place the way the thoughts are placed in the report, possibly the doomsdays will be over, and we'll be looking for great India, vibrant India, and I always believe calling Bharat. And if I look at some of the facts where we stand today and where we want to go in days to come, so if I look at the HDI, Human Development Indices, we stand somewhere at 0.644, and there are three components of HDI. Education is one, and health is the another, and income, per capita income. Unfortunately, on all these three scores, we have not been doing well, and as a result, we are 134. We should have been much, much better than what it is today, where we are today. And when I'm looking at the health, our life expectancy at birth, what we call LEB, is only 60.7.7. Neighboring Bangladesh is doing far better. They are 70. And we are only at 67.7. When I look at Bangladesh, which I go for many research work very frequently, things are even worse. I have been to rural areas, but I still cannot figure out why Bangladesh has been doing better than in India in health indices. One reason, what struck to me, was the community feeling and the community cohesion that has helped the country to a great extent. And their primary healthcare system is far, far better than what we have in India. Similarly, if I look at the education parlance in India,
Our primary education has suffered a lot, hugely. We have not invested in primary education, neither in the infrastructure. As a result, what happened? I went to Jilla School, did my matriculation in 76. We had a beautiful government building in Jilla, which still stands in Ranchi. And I can vouch you, the quality of education in Jilla School was better, far better than what we see in some of the best known schools today. And the quality was good. Why didn't we allow such a path today? Why the primary government aided schools or government schools are not doing well? Why people are not sending their kids to government schools? The time has come that our public expenditure on education should go up. In fact, NEV is looking at in 2035 around 6%, which is around 4% right now, close to 4%. That should go up. We should focus our faith on good primary and secondary schools aided and by government. State government and central government should play key role in reviving primary and secondary schools, and that will really play the great role in days to come in future. अभी क्या हो रहा है कि मेरी हेल्थ इंडेक्स में वी आर लो। जब मैं देख रहा हूं कि एक्सपेक्टेड ईयर्स इन स्कूल्स इट इज 12.6, मीन इज अराउंड 6.6। अगर मैं वर्ल्ड को देखता हूं तो इट इज 13 एंड 8.7, वी आर लोअर रैंक। अगर मैं हायर ग्रुप में जहां इंडिया है वहां 75, 14.5 and 8.6 है। So what I find that India is low, quite low. जब स्कूल में देखते expected years in schools, which is, as I said, 13 point and 8.7, we are low. Why is it so? Why things cannot improve? And things must improve. If cannot improve is not the solution, must improve. And that is where, so if I look at HDI, where education, income, and life expectancy, health, these three have strong correlations. If your education is good, you focus more on health, and your income level is also good. It has been empirically proved that higher education leads to higher income and higher consciousness towards health. Not many times people who are not, when I was doing my health PhD from Satara and Pune, rural district areas of Pune and Satara in Maharashtra, I focused on rural population, and I was able to establish empirically that those who were better qualified, they were looking at their health in a much better manner, and therefore their consciousness for health was high, and they were in fact looking for health insurance policies than those who were not very well educated. So all these three, education, health, and income, has strong positive correlation. So one, if health improves, the education improves, so the income improves. The other way also, if we scale up the education, our health will improve, and so will be the income. What I was looking at, some of the facts, that when we move from primary to secondary education, the gross enrollment level falls. So primary education, the gross enrollment level is somewhere around 99.2% for boys and 97.9% for girls. But when we move on to higher secondary level, the gross enrollment level is only 57.8% for boys and 48.6% for girls. The question is, why is it so? Why have we not been able to retain a student at a higher secondary level? So a lot of talks, a lot of good steps taken by the government, both the state and central, providing meal, providing nutrition, but the fact remains that we have not been able to retain students at 57.8 and 48.6 for both boys and girls respectively. That shows
that those who were enrolled at the primary level, only 50% of them are going to the secondary level. And even at the higher level, the number goes down. That's not a very good trend. That's something which should worry us. That's something we need to look at very seriously, how we can retain, how we can nurture them, how we can possibly make them to take up higher studies. Finance is not the only problem that we have not been able to retain, and that calls for a lot of research, that the accessibility to higher education is because people do not have money. Most parents and families are not able to send their kids primarily because they do not have money. That is definitely a challenge. I am not ruling out that. But there are other reasons also, and we need to look at those reasons why students are not taking up higher education. And some of the reasons, what I can make out, which is not, of course, research based, evidence based, it's on my perception, is that the quality of education, the way education is taken up, education has not been able to create the kind of interest in these young minds the way it should have done. It's rote learning. I remember I wrote the definition of economics in my college days in St. Xavier's College, Ranchi. I was asked to write the definition of economics. And I wrote the entire definition very well, not even miss the full stop and comma. And my teacher, who was a priest, a Belgian priest, gave me almost zero. He knew that I was slightly better student than average student. And he called me and I said, why, sir? Everything is fine. All the definition verbatim is there. You cannot make out any mistake there. And still you are giving me zero. What he said, and it struck me today, man, he's told me, look, I'm not testing your memory. Your memory is good. I'm not testing your memory. I'm testing your understanding about economics. Which is more important? Whether you understand economics or not, the definition by memorizing it and then vomiting it in the examination paper, and if you are scoring good marks and thinking that you are a good student, possibly that's not what we are looking at. We are looking at whether you're able to understand the meaning of the word, of the definition of the economics, the way we want you to understand. That is very, very important. So this creating interest in this subject is very important. As a teacher, what is our role? You understand? Our role is to fire the ambition. In 2 hours time in management schools, we cannot teach everything. But if as a teacher, if I can fire the ambition of a student in a particular subject, I have done my job. Because the student will learn all by himself. He will not have to look out for me all the time, or he will not have to always rely on the classroom teaching. As a teacher, my role is only to create and nurture and fire this ambition. And believe me, most often we fail in that duty. Looking at some of the other things, the true meaning of the word education is to draw out, know thyself. Know thyself has a wider connotation. To know your own existence, to know your family, to know your village, to know your city, to know your neighboring areas, to know your state, to know your country. How much do I know? To know my root. How much do I know about all these things? You ask in a country, take a sample of 100 students, even the brightest students in India, and ask some basic questions that what is the difference between Republic Day and Independence Day? You will be surprised that many people don't know, many youngsters don't know the difference between Independence Day and Republic Day. If you ask them, what is India's national song and what is the difference between national song and national anthem, not many people will know that. Clearly shows that we don't know our roots.
So knowing thyself is very, very important, and that is where Diksha Aram, which is culturally rooted, when we start our Diksha Aram, is a small function in a family. And we do it with a lot of fervor. And the fervor is that we are trying to create in the family, our culture is such that we tries to create a temperament about educations. And this education should give you empowerment. Why violence is increased in Indian society? Because elsewhere also, I will not only say that it's increased in Indian society. You go abroad and you'll find violence in all forms, on all sides, very rampant. Violence is there only because of the fact that the empowerment through education has not taken place. And that is the reason violence is so rampant, so evident. Because the empowerment that the education should have done, it has failed to do it. And that is where we should go back to our roots. Diksha Aram should take place the way he used to do. I remember my Diksha Aram when I was a kid of 3 years. My father took me to a school in Jharkhand, a place called Madhupur. I went to a small school, and I remember the slate was there, the chalk and it was there, and I was made to wear dhoti. And when I look back and try to understand why my parents did it like that, now I realize that my parents did it deliberately, that I must remember my root, I must know myself, my country, my religion, my other religions, my culture well. And this is what the new education system is trying to go. It emphasizes that you know your roots very well. It's a country of Charak. It's a country of, you name almost all eminent people from economics to mathematics, and today we have forgotten them. We have forgotten them, and we remember names, new names, and we have altogether forgotten those people who were so important during our Vedic period. But as I said, things are not hunky-dory. You have to wrap up now. Okay. And wait for questions from our participants. Okay. So as I said, things are not hunky-dory. NEP is definitely a step in right direction. What we need is that we have to take the initiative of the government. The problem in India is that we look at for everything for government to do. That's not the right way. Government takes good initiative, and it has really taken good initiatives. Now it is for the civil society, people around us, everybody take the good work of the government together. The initiatives of the government must be taken forward. If government errs in some of its decision, it's body like us to make the government understand, look, you are deviating from what you are preaching. And that is how the vibrant society works. That is how a good education system we can build in India. Thank you so much for giving me Very nice. Very nice. Wonderful. Right. Professor Right. Chaturaj. And in fact, many of the participants who are listening to you have written on the chat box several times, well said in terms of what you mentioned. So having said that, I would like to just say a few key words in terms of what you mentioned. हम लोगों को सरकार पे सारा चीज सरकार पे नहीं छोड़ना चाहिए, या सारी चीज उनके भरोसे में नहीं छोड़ना चाहिए. और हमको याद है, हम जब किताब में पढ़े, जब जमशेदपुर बना, जो उनके फाउंडर थे जमशेदजी नौजरनजी टाटा, जे.एन. टाटा, उन्होंने अपने मेमोर्स में लिखे थे कि स्टील प्लांट बनने के पहले ब्रॉड रोड्स बननी चाहिए, दोनों तरफ प्लांट्स लगानी चाहिए, ट्रीज शुड बी प्लांटेड, देयर शुड बी स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, देयर शुड बी हॉस्पिटल, देयर शुड बी मार्केट प्लेस. But he made one distinction
that for higher education, there will be no facility in Jamshedpur. Students have to go out of Jamshedpur to study higher education. And he had a motive behind that. Because he felt that after high school, a student must be exposed to the other community in other cities and in other states rather than staying in the same city. But of course, as one very reformist educationist, a Parsi gentleman called D.N. Madden, he worked very hard with the Tatas to start the first cooperative college in Jamshedpur. Because the college which Tatas promoted was in a place called Chaibasa, which was about 40 kilometers away from Jamshedpur. That was the only college nearest to Jamshedpur in early days, till cooperative college started in Jamshedpur. See, what I wanted to tell you in brief is that when Tatas brought out that township, they took the land from the government, but did not take anything else from the government. They built that township, they built their industry, they built the future of the employees who worked in Tata Steel, and then it started growing. Many industries came up. So what I want to tell you all is education is retrospection, which Dr. Abhijit said that you have to look within you. And now, of course, we will go to quality and standard. And I'm very happy to note that one of our former CEO of Quality Council of India of NABCP, Mr. Anil Johri, has joined us, which is very nice of him to have taken time to join us. We listen to you also, Anilji. But let us first listen to our chief guest, the CEO of NABED, National Accreditation Board for Education and Training, Dr. Virender Singh Kanwar, who is with us, who is also a professor and an academic person, to tell us what he feels should be the future role of Quality Council of India in taking education and capacity building through training in our country forward. Professor Dr. Virender Singh Kanwar, the mic is yours. Please come. Thank you, sir. Thank you so much for allowing me and for asking me to come to this August gathering. I feel like I've not thought of so many people, and in this so many good people from even abroad, they are joining, and they are there. The people are there on the Facebook and all those things. I was traveling, so I thought I should maybe break my journey and attend this conference, attend this webinar, and then further pursue my travel. So it's a great challenge, sir, as of now for the education, because as sir also said in his address, that quality, when we call about quality, it is not the end product, it is the journey. And when we, the stakeholder, we are not thinking that this quality, as you said, it is not the government responsibility, but it is our own responsibility as well. We and both South Korea, we were given this independence almost in the same year. But see where they have reached in terms of GDP and where we are. So it is not because there the government is not active or our government is not active, but there the willingness to do some proactive work with the society is much more than we are. Slowly things are getting evolved, changed. As in the Quality Council of India, when it comes to the my board, that is quality, the National Accreditation Board for Education and Training, we feel that this in new education policy, which the concept of 5+3+3+4 means, earlier it was the career oriented, we can say, but now it says that up to class 8th you should be teaching the student to the student centric approach. It is up to their wish, means more of the we can say it's like a playway type of activity should be there. The regional languages should be promoted. And when it comes to the 9th to 12th standard, that there will be the career oriented, because earlier only 2 professions were known, or maximum 3. We will say go for the MBBS degree, go for the engineering, or go for the commerce side.
But now with this change in the we can say paradigm shift, because the government has brought so many things into picture. The village internships, the exposure to the various the traditional trades in the schools, because the days has gone when we will ask for these type of professional courses. Now the courses like fine arts, the courses like liberal arts, the courses like journalism, the courses like the marketing, that is great demand. And even if I've seen the topper of your 10+2, they are going for the courses for the hotel management. So it is how the things are getting changed. And we in the Quality Council of India, we also do so many activities like sir said, why not people are entering into the government schools. But now, sir, the proactive governments wherever they are, and it is being the head of the institution which matters a lot. We are doing some activity in the Pre-Chinchwad Municipal Corporation, where the commissioner is such a dynamic person. He said, I want to improve the quality of the quality of the school in the government sector in that corporation. So we are hand holding 128 schools. We are going, we are checking their baseline data, and on the basis of baseline data, we categorize the student as A, B, C, and D. Now, the task given to us, the categorization is very easy. The task given to us is at the end of one academic year, we have to show them that these C and D category student should be moved to the B and A category. And this is how we are hand holding the teachers, hand holding the students. We are making them, we are making the course plans for them. We are observing the classes. Sometimes it happens that a teacher is very good, but when it comes to the understanding of the student, they may not be in position to understand. And we all know that in the government jobs, best of the teachers are there, because when one post in the government is being advertised, almost 10,000 applications are there. So if we are selecting the best of the teacher, why the quality of the education is not improving in the government schools? This is what a big challenge is there. But now slowly government is taking the initiatives. We are also taking the in the positive direction, and I hope within a span of 3 to 5 years, this shift is going to be seen in the ground itself. After COVID, we have seen the shift also. Many of the people who were there in the government, in the private schools, they have moved into the government schools, and this type of change is required. Yes, we have to maybe do our investment more, as we have seen in our education sector. The amount which we are spending at the government level, this is going to increase slowly and slowly. The big countries or the developed countries, they are spending around 4% or 5%. We are still at around 3%, and we have a huge population. So the government is also doing some great initiative. We at Quality Council of India is also hand holding even some of the private schools. They are being accredited by us. And when it comes to the accreditation, NABET is the only board in the country which accredite the schools. So it is like process we are developing there. In that case, it is not a person driven school, it is a process driven school. So this type of things we are thinking and we are bringing, and I hope in the next 5 to 10 years, the change is going to be there. There are a lot of buzzwords like startups. There are a lot of buzzwords like teaching basic computing in the schools. Earlier, this type of facility was not there. Anybody who was thinking of opening a business, bank were not giving the loans. Now we have the soft loans, we have the government schools, the government schemes for getting the loans. You can have your own venture instead of asking for a job. And when I was the vice chancellor of a university, 2 year surprise. Earlier, the wards and the parents, they were asking us that what is the placement of your college when they are going to put them in that particular stream. But now they are asking that, sir, do we have the incubation center in the college?
do the companies come and they take the interns during their course here, the course of study? So this is the shift which is being seen, and we as a parent, we as you can say student are now well aware of the things. We are knowing our rights now. So it is, I hope, the schemes like Prime Minister Research Fellowship schemes, which are there to stop the brain drain. So those are, when we monitored those schemes, when we monitored the implementation of those schemes, we found that up to the PhD level, the students are now taking admission in the Indian universities. But there was outcome of that monitoring, that they also now want that this type of scholarship should be there in the postdoc also. So the people should not think of going abroad for the higher study. They should get the facility, they should get the laboratory, they should get the money, so that that brain drain can be stopped. And why not, we have a patent granted as well as commercialized here in India with the research grant which the government is giving. So this is what in brief I want to discuss as of now. But yes, I think we can take most of the questions if they are there. So it should be a two-way dialogue which should take place, and I'm more than happy in answering those questions Thank you wherever very if much. we, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बिकॉज आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो इशू सामने ले आए हैं कि कैसे हम लोग एजुकेशन में गुणवत्ता ला सकते हैं, कैसे हम लोग उसको आगे ले जा सकते हैं, क्या उपाय हैं, और आपका सीईओ के रोल जो नेबेट में है, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो प्रचार करने के रूप से अब गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, वो कैसे हम लोग पहुंच पाएंगे, इस पे हम लोग विस्तार से आपसे सवाल पूछेंगे और अपेक्षा रखेंगे कि आप जरा रुके रहिए हम लोगों के साथ और start your journey after our webinar is over. So thank you very much for taking a break and being with us in a stable manner rather than being traveling. Having said that, I must announce to my friends that one of my friends from California has also joined us. Alok ji has joined us. Alok Joshi ji has joined us from California. Of course, he's hiding behind the camera. He's not showing his face. You know, my other two friends from US are showing their face, but I can appreciate at this odd time. I can show my face. That's fine. Hi, hello. Hi, hello. Hello. Nice to see you. Nice to see you that you have joined. Now we've got 3 people from overseas, from US. You know, I'm so happy that you have also joined us. So having said that, if all of you agree, I will first give preference to my friends from overseas to speak a few words or ask questions to our keynote speaker, Professor Chattaraj, or to our chief guest, Professor Kanwar. So let me start with Professor Ramaiah. Professor Ramaiah, if you can also give a very brief introduction about yourself to maybe the first time attendees to this webinar. Professor Ramaiah, Yes. unmute and come. Yes, my name is Ramaiah Mutiara. I'm a professor in the University of Minnesota in the experimental clinical pharmacology. And also I'm the president of Indian Organization for Rare Diseases. I've been in this country more than 50 years, but there's still a lot of smell that I brought with me when I was 25 to this country. So that way, even though it's 1:30, 2 o'clock in the morning, it doesn't bother me. I still like to come. If you guys allow me to come every time. Okay. Now, let me be honest with you. I've been making some notes as our speakers are making. A couple of comments first. You know, in India now, the quality is increased and quality is reduced and quantity is being increased. And just last week, I heard that 6 medical colleges were initiated in Telangana. Can you explain to me, sir, how the quality will build up? If there are no faculty, we can teach them. That's my comment, sir. Who can answer on that one? And of course, a rote memorization is must in order to get the IIT seat.
Okay, and that's what you are dictating them to do that. And now, another thing, why people are not going to private school or going to private school, even though they don't have a playground, but whereas government schools, we demand that we want to private playgrounds. Why this dichotomy? Thank you, Yeah. sir. I have a lot of things to say, but I am also educated. Yeah, That's why. Professor Chattaraj, you want to react? Professor Chattaraj? Very rightly said that school first the ideas why this quota problem is there, sir. Quota problem which in the limelight for wrong reasons most of the time is because the kind of coaching that is imparted for the student to go to IIT, it's absolutely no. There is very few little scope for creativity. Now, if our IITs and IIMs start taking Your students, signal is poor. Your signal is poor. It's coming poor. We're not able to hear you clearly. I'm sorry that I was. Am I audible now, sir? Yeah, you can. In the Yes. meantime, our chief guest, Dr. Kanwar, you want to say a few words? Yes, sir. First, I'll try to connect from other device. Okay. So, can I answer, sir? This, Yeah, please. it is rightly said that the quality may be a little bit less than the quantity, because we are a huge country, sir, population wise, and right to education is there for everyone. So if we have to educate them, it is not only that everybody should get quality education, but at least get the basic education. So this is the first, that we have to educate people. And when you come to the quantity, a little bit quality is going to hamper, but slowly it will also come online. Because earlier, sir, it was told to us when we were kids that if you want the quantity, go for the Samsung type of TV or refrigerators, and if you want quality, go for the Sony. But now the things have changed. Now even Samsung has. His mic is off. You've gone mute. You've gone mute. Now it is okay, sir. Yes. Okay. So I was telling that yes, it is true that we are going for the quantity and less quality is there in that case. But the problem is we are a huge country, sir, and right to education is there for everyone. You have to teach them the basics. In those basics, quality may not be that important, but you have to ask them to come to school, learn this numeracy and literacy part. So that is one part. Thank you. Sir, excuse me, sir. One comment on that one. I do agree. Sir, only one part. Like you said, in medical education, there in Telangana, you have 6 medical colleges. Sir, we have very good council now. If you don't have faculty, if you don't have infrastructure, you can't open the medical college. And till now, we have a huge demand for doctors. And now the government policy is that every district should have a medical college. It is not that we are not getting good maybe physician or the teacher in the medical science. They are there, but slowly now what happens when a physician join a hospital, he will get a huge amount. When it comes to the serving in a college, he may not get that much remuneration. But now the things are changing. Even a good faculty is allowed to work in the hospital as well as in the teaching. So this is what. Okay, Yes. thank you. We have to be brief because there are a number of people waiting to, have conversation with both of you. So, Professor Ramaiah, you wanted to say some words. Yes, I do agree with you. Agree with you. I think the emphasis should be on the basic education, not at the professional education. Because if you become a surgeon with a poor quality, do I come back from this surgery bench? Can you ask that question? Again, as you said, that it is a right of education. I say the same thing about the health. It's also right. We are a huge country. I do agree. Thank you. Thank you. Ranjan Vermaji. Be little short, brief, to the point. Ranjan Vermaji from US.
Yeah, thank you so much, Bejo Mishra ji, for giving me this opportunity. It's really a privilege for me. So I just like to highlight some of the comments. I was listening to the speakers, and I completely understand that education is the most important thing. In fact, किसी भी country का development उसके education system से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है. नहीं, हम केवल आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप इंडिया से आप यूएसए में हो और आप काफी लोगों से मिल रहे हो जो यूएसए में पढ़ाई किया है, तो आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है when you compare yourself with your friends who have studied in USA? Can you tell us in brief, quickly? Yes, the one thing which I will say, the quality of education in America, if I compare to that of in India, is way too different. I mean, over here in America, the education is more focused on practicals rather than theoretical stuff. Whether you talk about medicine, you talk about engineering or whatever, or even the primary education. यहाँ पे यहाँ पे एक तो कंपटीशन कम है उस मे बी दैट इज वन ऑफ द थिंग कि यहाँ प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज बच्चों को हम लोग के न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो उसी पे फोकस कर रहा है जो आप कह रहे हो, जैसे अमेरिका में है, हम लोग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी उसी चीज को फोकस कर रहा है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है. सो इस पे हम लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा. आलोक जोशी जी फ्रॉम कैलिफोर्निया. Yes. Hi, everybody. My name is Alok Joshi. I'm a product manager out here based in California. I work in a tech company. And I'm here because I'm really passionate about the field of education. And my mom, Seema Joshi has asked me to be in this as well. So she's my number one guru and she's asked me to contribute to education somehow. That's why I want to start. आप हिंदी जानते हो? हिंदी हाँ, हिंदी भी जानते हैं. Yes. तो थोड़ा बहुत हिंदी में भी बोलिए. ठीक है. पक्का जी. फर्स्टली थैंक यू यार, धन्यवाद. हम लोग को अच्छा लगता है सुनने में, अमेरिका में बैठ के हिंदी में बात कर रहा है, सुनने में अच्छा लगता है. हाँ, करेक्ट. तो फर्स्टली धन्यवाद. आज बहुत सीखने को मिला, बहुत एंजॉय किया, तो थैंक यू फॉर स्पीकिंग एंड हैविंग दिस फोरम. And the only thing I wanted to say was I completely agree, rather than overburdening our formal education institutions, somewhere we need to shift the mindset कि हमें decentralize करना चाहिए education in terms of how we have internet, AI, the newer technologies coming in, rather than just focusing कि education institute में ही हमें education मिल सकता है. We have to make it such that it can be done anywhere, everywhere. And at least one link I saw that we can really work on is कि अपने parents, अपने माता पिता हमारे एजुकेशन में भी they should take proper effort, right? I think lot of times people become parents और उनको लगता है कि अरे यार एजुकेशन तो स्कूल का काम है, राइट? हमारा काम घर चलाना है, राइट? नहीं, आपका काम सिखाना भी होता है. तो वो फोकस करेंगे ना तो इट बी वेरी गुड. इट्स अ easier thing to do and you get such the teacher to student ratio will also be easy, right? Everything is solved. बहुत बढ़िया. That's the only 2 cents. बहुत बढ़िया. आलोक जी, आपने बिल्कुल इतना ब्यूटीफुली बताया है कि पेरेंट्स का रोल in terms of shaping your education is extremely important, and I fully agree with you. आप as a product head, आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, आप ये सोचो कि एजुकेशन इंडिया में कैसे आप प्रमोट करोगे पेरेंट्स के पास, और पेरेंट्स को टीचर्स बनाओगे, इस पे आप ध्यान दो, और इस पे कोई स्टार्टअप कंपनी शुरू करो और इन्वेस्टर ले आओ इंडिया में, ताकि उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ सके. हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग जैसे लोग जो विदेश में हैं, और आज आप लोग चूंकि विदेश में हैं, you are the highest foreign exchange earners for our country. Let me tell you, I salute all of you. हम लोग जितना ना एक्सपोर्ट से कमाते हैं, हम लोग उससे कई गुना ज्यादा आपके रेमिटेंसेस से कमा रहे हैं हमारे देश में. So keep earning dollars and sending it to India.
and make India grow and become number one. That's my desire and wish. Thank you for joining. Thank you for joining. I would like to come straight to Anil Johri. Anil Johri, if you can show your face to my colleagues. I have also not seen your face for a long time, but we keep chatting on the group, on WhatsApp group. Anil Johri was the CEO of National Accreditation Board for certifying bodies, NABCB. उसके पहले वो BIS में थे, हम उनको कई सालों से जानते हैं. अनिल जौहरी जी, आपका कोई प्रश्न या कमेंट्स? अनिल जी, आप हैं? He looks to be quiet. So, ईशा खान जी, आपको अनम्यूट करके आना होगा. जी सर, ये बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली हैं, काफी प्रोत्साहित करती हैं ये सारी बातें. लेकिन इन दिनों, बल्कि कल परसों ही सुदीप साहू जी से कुछ बातचीत हो रही थी कि अब स्कूल तो खोलना बहुत अच्छा बिजनेस हो गया है. तो 2 कमरे के 4 कमरे के रूम में स्कूल खोल लिया जाता है, लेकिन इसके पैमाने क्या है स्कूल खोलने के, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं है हमारे देश में और प्रांतों में. और अभी सर कुछ दिनों पहले कुछ छोटे बच्चों ने एक हाईवे पे अनशन किया था कि हमें बहुत दूर जाना पड़ता है स्कूल के लिए, करीब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाना पड़ता है. तो इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है प्रांतीय सरकारों को. बहुत गुड है, बहुत बढ़िया. इनफैक्ट इट इज वेरी गुड. हमको नहीं मालूम आप लोगों का क्या सोच है. यू सी, आज कोचिंग स्कूल्स बहुत खोल रही हैं, लेकिन स्कूल्स नहीं खोल रहा है, लेकिन कोचिंग स्कूल्स खोल रहे हैं. तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि स्कूल खुलना चाहिए कि कोचिंग स्कूल खुलना चाहिए. ये हमको नहीं समझ में आ रहा है. इसको हम लोग का अध्ययन करना होगा कि क्या मामला क्या है कि स्कूल्स खुला हुआ जो भी चल रहा है, वो होते हुए भी फिर लोग स्टूडेंट्स को कोचिंग स्कूल जाना पड़ रहा है. और हमको याद है हमारे बचपन में कि यदि हमको कोई एक्स्ट्रा कोचिंग देना था तो टीचर हम लोग खुद आफ्टर क्लास रखकर कोचिंग देते थे और वो मुफ्त में मिलता था. कभी हम लोग को कोई कोचिंग स्कूल में दाखिला नहीं लेना पड़ा. तो हम अब रिक्वेस्ट करेंगे प्रोफेसर प्रमिल तिवारी जी को आने के लिए. प्रमिल तिवारी जी, आपका कोई प्रश्न या आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सर. इस पैनल के सभी सम्मानित सदस्यों का, मैं चूंकि लैंडस्केप एजुकेशनल चेंज की बात हो रही थी, इसलिए आज मेरी दिलचस्पी थी कि मैं समझ सकूं. डॉक्टर वरिंदर कंवर ने जो क्वालिटी और क्वांटिटी की बात कही है, वो सर मेजर मिश्रा साहब चाहूंगा कि आप अपने नोट्स में कहीं लिख लें, और अगली बार जब कभी चर्चा का विषय हो सो हम कुछ अनुभवों के आधार पर इस पर चर्चा कर सकें कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इम्पैक्ट रहता है. शायद वो आगे के समय के लिए लाभदायक होगा सोचने के लिए. इतना ही समर्पण है सर. धन्यवाद. बहुत अच्छा, नोट कर लिए. एंड आई विल टेल यू दैट हम एक्चुअली NABET में बोर्ड में हम थे. आई थिंक 2 साल हम रहे उनके साथ. जी सर. हमारा ऑलवेज ये लक्ष्य रहा जब हम बोर्ड में थे कि कैसे आम आदमी को पता लगे कि हमारे नेबरहुड में जो स्कूल्स हैं वो कहाँ रैंक करते हैं, वो क्या क्वालिफाई करते हैं, वो 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है. तो हम ऑलवेज ये नेबेट को कहते रहे कि आप ग्रेडिंग करना शुरू करो ताकि आम आदमी को पता लगे कि हम कंपेयर कर सके कि हमारे बच्चों को कौन स्कूल में भेजना पड़े जो कम से कम पैसे में अच्छा गुणवत्ता एजुकेशन दे पाए. तो सस्ता और टिकाऊ जो हम लोग ऑलवेज बोलते हैं, तो एजुकेशन में सस्ता और टिकाऊ कैसे होगा प्रोफेसर कन्वर जी? जी हाँ, ये प्रश्न आप ही के पास है. सर, आपने जो कहा शायद उसी को, क्योंकि मेरे को तो वो सौजन्य नहीं मिला कि आपके साथ उस टाइम बोर्ड पे रहूं, बट उसी लीगेसी को आज चलते हुए आज सर हमें एक नीति आयोग ने बहुत अच्छा काम दिया है टू रैंक एंड रेट ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री which include all councils colleges like MBBS, BDS, nursing. तो उसमें भी सर वही जो आप बता रहे थे कि हमें एक जब मैं अपने बच्चे को डालना चाहूँ
So I should come to know that this college stands at what level, so that it is worth sending my the ward to that college or not. एजुकेशन में ये यहाँ पे शुरू हो चुका है, बट अभी स्कूल एजुकेशन में ये, क्योंकि एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, कुछ स्टेट्स हमसे करवाती हैं, कुछ स्टेट्स अभी नहीं करवा रही, बट स्लोली वी आर स्पीकिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दैट यस दिस शुड बी डन थ्रू आउट country, but it has to be mandated by a regulatory body. Otherwise, people feel like this is an extra burden to them. So the most important factor, Professor Saab, most important factor is what is the criteria you will adopt, what is the methodology you will adopt to rank, and you have to make sure it has to be neutral, unbiased, uninfluenced. So बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी करना है इस प्रोसेस में, और एंगेजमेंट विद रेप्यूटेड पीपल, who are of repute, who have contributed a lot in education, उनको इन्वॉल्व करके क्राइटेरिया डेवलप करना है। जैसे हम लोग यदि कोई भी प्रोडक्ट का रेटिंग करते हैं उनका क्वालिटी को लेकर, हम लोग बहुत वेटेज देते हैं प्राइस फैक्टर को, क्योंकि while you give quality you also have to make it affordable. हम हाई क्वालिटी कह के हम लोगों से पैसे नहीं ऐंठ सकते हैं। हमको क्वालिटी जो मिनिमम गारंटी होनी चाहिए वो क्वालिटी देते हुए कैसे कम से कम पैसे में मिले, और इसलिए हम लोग को ऑलवेज ये स्लोगन रहा कि वो टिकाऊ हो और सस्ते हो। मतलब वी डोंट वांट दैट क्वालिटी शुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर प्राइसिंग, but pricing should be linked with quality, so we have to engage on that, which is very important. Sridhar Reddy ji, आप आना चाह रहे हैं? मिश्रा साहब एक थोड़ा मुझे बोल रहे हैं। हाँ एक मिनट, हाँ बंदोबस्त चट्टोराज जी सॉरी। ये जो आपने अभी बात की रैंकिंग की, मैं ना यार रैंकिंग की मैनेजमेंट स्कूल्स के बारे में बात करना थोड़ा पसंद करूंगा। वहां पर रिसर्च कंपोनेंट को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली जो मैनेजमेंट में भी रिसर्च जो चल रहा है उसका स्तर बहुत खराब है। एक एबीटीसी ये है संस्था ऑस्ट्रेलिया में है जिस पर अगर आप अपना रिसर्च पेपर उसमें छपवा लेते हैं, और वो छपवाने से क्या होता है, वो एबीटीसी और स्कोपस वगैरह में वेबसाइट के इंडेक्सिंग पर के आधार पर आपको मार्क्स मिलता है। अब ये कॉकस है, और ये कॉकस है जिसके पास पैसा है वो उसमें छुपवा लेते हैं, और इसमें कुछ लो रैंकिंग आईएम्स भी इन्वॉल्व है। तो इसका प्रभाव ये हो रहा है कि जहां जिसे कह रहे थे कि क्वांटिटी पे तो हम बढ़ जा रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दोस पेपर्स, कितना उसका साइटेशंस होता है। और अगर आप उसके आधार पर किसी की रैंकिंग को बहुत बढ़ा देते हैं तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। यू नीड टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ पेपर्स। यहाँ पर लोग गूगल फॉर्म पर क्वेश्चन लगा के सारा रिसर्च कर ले रहे हैं, कोई ग्राउंडेड रिसर्च नहीं हो रहा है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च हम बात करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी पर बेस्ड होता है, उस तरह की रिसर्च नहीं हो रही है। तो जब रैंकिंग में आप कह रहे थे कि पैरामीटर्स बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोग को पता लगना चाहिए, ये क्या हो रहा है कि नंबर खाली बढ़ रहा है, क्वालिटी कुछ नहीं, उसकी साइटेशंस कुछ भी नहीं है, और वो साइटेशंस में मैनेज किया हुआ साइटेशन। नहीं बिल्कुल, आपको एक तो जब भी कोई भी स्टडी आप कर रहे हो, आई जस्ट कम टू यू सिंह साहब, हम आ रहे हैं आपके पास, हम श्रीधर रेड्डी को पहले बुलाएंगे, फिर उसके बाद हम सिंह जी आपके पास आएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चट्टोराज जी, आपने जो कहा था अबाउट जनरल नॉलेज ऑल्सो स्टूडेंट्स का, अभी हम हाल में इंटरव्यू कर रहे थे एमबीए स्टूडेंट्स इन उड़ीसा। आप मतलब चौंक जाएंगे कि उन लोगों को बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो नहीं मालूम है, जबकि वो लोग एमबीए पास कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा केवल उड़ीसा का नहीं हालत है, ये ऑल ओवर द कंट्री में ये हालत है कि लोग मतलब कंठस्थ करके डिग्री ले लेते हैं, पास कर जाते हैं किसी तरह, लेकिन जब वो बेसिक फंडामेंटल आप उनसे पूछेंगे कि क्या जो जनरल नॉलेज जिसको हम लोग कहते हैं वही लोगों को नहीं पता होता है, तो ये थोड़ा चिंता की बात हो जाती है। तो करिकुलम की बात होती है, तो ये हम लोग को समझना होगा। तो श्रीधर रेड्डी कम
Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. My name is Sridhar Reddy. I previously worked in Ombudsman Office, Insurance Ombudsman Office. So thank you very much for giving this opportunity, sir. Can you hear me? Yes, we are loud and clear. Sir, as our learned Abhijit Chatura sir has rightly put it, higher education leads to higher income and higher health. It is a really relevant point. But at the same time, I would like to add one more point. Not only higher income and higher health, higher values in life are also important. And that is possible only when parents also start taking the role of teachers. Because every parent is a teacher. Every parent must become a teacher to their children. Then they must impart them higher values in life. Then only they will come up in their life and have evolve as good human beings. Because we may be knowing many school dropouts and college dropouts are also excelling in their fields like business and politics, etc. But to become a good human being and excel as a good human being, the role of parents are very important. Yeah, Alok Joshi ji told us this in his intervention from California. You know, Alok Joshi ji stressed the point of how parents can play a role, which is a very important aspect. So parents must also be counseled. They must be given counseling by the government or online coaching, whatever it may be. Very good, very good. They know the importance of become the role of a teacher for their students. Because Alok Joshi ji already बोल चुके हैं कि कोई investor खोजें USA में और इसको आगे ले जाएं in a model where in an affordable manner हम लोग parents को teachers बना सके और उनको वो डिग्री हासिल करवा सके जो B.Ed में पढ़ाया जाता है या इस ढंग का जो डिग्रीज दिया जाता है पढ़ाने के लिए टीचर्स को, तो पेरेंट्स को भी हम लोग घर बैठे आजकल मोबाइल फोन पे यदि हम लोग इस ढंग का सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करवा सके तो वो बहुत ही बड़ा एक उपलब्धि होगा हम लोग देश के लिए और हम लोग को करना भी चाहिए इसको लेकर. तो मिस्टर सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी अनम्यूट कर आइए आप, प्लीज अपने को अनम्यूट करके आइए. जी सर, नमस्कार सर. नमस्कार. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और छठ पूजा के भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना. हम सर बिहार के भोजपुर जिला के रतनाड़ पंचायत के बेरथ गांव से सर बोल रहे हैं और श्री उदय मन्ना जी के सानिध्यता में जो इस तरह का शिक्षा के प्रति जो और हेल्थ के प्रति बहुत सारा कार्यक्रम किया जाता है, उसमें बहुत सारे लोग गांव घर से जुड़ते हैं और उसमें हम भी जो है उसकी गवाह हैं. और इसके पहले एक वेबिनार हुआ था सर, उसमें करीब 70 से 80 स्टूडेंट्स, छात्र एवं छात्राएं जो हैं हमारे गांव पंचायत के जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट से पास हुए थे, वो सब लोग को जो है श्री उदय मन्ना जी की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दिया गया और शिक्षा आगे फिर क्या करना चाहिए उन सब बातों के लिए प्रेरित किया गया सारे विद्यार्थियों को. तो उनको क्यों नहीं जोड़े आज के प्रोग्राम में? उनको जोड़ना चाहिए इस प्रोग्राम में. विद्यार्थी लोग जुड़े हुए हैं, प्रहलाद जुड़े हुए हैं, प्रेम जुड़े हुए हैं, उसके बाद जो है और धीरज जुड़े होंगे, नीतीश जुड़े होंगे. बहुत खूब. और जी बहुत खूब. तो सर हम जानना चाहते हैं, एक निवेदन है आपसे, जो है एक मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि जो इतने अच्छे जो है टैलेंट पूर्ण छात्र छात्राएं ग्रामीण क्षेत्रों से निकल रहे हैं, तो जो शहरों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्यों न ग्रामीण स्तर पर उस तरह की शिक्षा मुहैया कराया जाए सरकार के तरफ से, अथवा जो भी ये बच्चे पास हुए थे सर, वो प्राइवेट टीचर जो कि कोचिंग के माध्यम से जो है अपना जीविकोपार्जन करने के लिए ऐसे वो अपना सेटल करने के लिए भी व्यवस्था उसमें रखते हैं और पार्ट टाइम जो है बच्चों को पढ़ाते हैं. और उनका इतना बढ़िया सर रिजल्ट आया कि एक मास्टर के द्वारा 50 लड़के जो है फर्स्ट डिवीजन और 80-82 करीब 70-75% नंबर लाए. शहरों में ऐसा जो है मानिए जाए तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उस संस्थान को या सर उस विद्यालय को यदि वह चीज मुहैया किया जाए, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो हो सकता है कि और भी बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारे मात्रा में जो है अपना फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स और
उससे भी 90+ ला सकते हैं। इस तरह की बातों पर सर ध्यान दिया जाए, सरकार को बहुत इसका अच्छा। ध्यान आकर्षण कराया जाए। हम चाहेंगे प्रोफेसर कन्वर इस पे अपना मतलब ओपिनियन दें, और प्रोफेसर चट्टराज ऑल्सो हम चाहेंगे कि आप इस पे इन लोगों को यदि हो सके हिंदी में समझाइए कि किस ढंग का आप सोचते हो कि जैसे क्वालिटी काउंसिल अब पंचायत तक पहुंच रहा है, और एक अभियान जो शुरू किए हैं वो लोग प्रधान को लेकर काम कर रहे हैं, ग्रामीण प्रधान को लेकर काम कर रहा है। तो आप क्या सोचते हो कि ये जो सुझाव आया है वो कितना, जो धर्मेंद्र जी जो कहे हैं वो कैसे हम लोग प्राप्त कर सकें? प्रोफेसर कन्वर। सर, ये बहुत जमीन से जुड़ा हुआ प्रश्न जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रफली 60 से 70% तबका जो अभी भी गांव में बसता है, और उस गांव में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना एक चैलेंज ही नहीं, एक बहुत हम सब की जिम्मेवारी भी है, जो हम सब उन पोजीशंस पे बैठे हैं जहाँ पे ये सब कर पाते हैं। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सर अभी एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, सरपंच संवाद करके। उस सरपंच संवाद में हम पंचायत को, हर पंचायत की, देश की हर पंचायत को आपस में जोड़ने के लिए एक एप्लीकेशन ऐप डेवलप करा हुआ है। उस ऐप के माध्यम से एक तो सरपंचों को ट्रेन करना, और उनके अंदर जो जो भी उसमें एजुकेशन है, स्किलिंग के आईटीआईज हैं, और उनकी रोजगार के लिए कुछ हम अगर उनको ई कॉमर्स वेबसाइट से जोड़ना है, तो ये सब काम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया है। तो अगर जिस गांव से भी सर हैं उनके प्रधान अगर ये खुद हैं, अगर नहीं है तो उनको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इवन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उस गांव में जाके वहां के आसपास के कोई 50 सरपंच अगर ये इकट्ठे कर दें, तो हम उनके लिए अपने पैसे से हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं। 90% ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स जो दिल्ली से लॉन्च होती हैं, गांव तक शायद लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं हो पाती। तो उस ऐप के माध्यम से हमने सोचा है कि हमने हर गांव को कवर करना है, और वो जो सरकार के इनिशिएटिव्स हैं वो वहां तक पहुंचाने हैं। उसमें स्कूल भी एक कंपोनेंट है, जो अभी हमने गुजरात में अहमदाबाद के पास वहाँ क्लस्टर था 15 स्कूल्स का, वो शुरू कर चुके हैं। बिहार में भी हम जरूरत से ज्यादा अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे, बस इन लोगों को थोड़ा सा उसके साथ अपना अटैच कर लें तो। धर्मेंद्र जी, आप क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से संपर्क करिए, और आपके जो प्रधान हैं, आपके नजदीक के जितने प्रधान हैं उनको एकत्रित करके ये अभियान में जोड़िए उन लोगों को। हम सोचते हैं कि उससे आप लोगों को फायदा होगा। हाँ जी सर, एक बात हम कहना चाहेंगे कि पंचायत में 3 प्रकार की प्रधान का पद होता है। जैसे कि एक पद प्रधान पद होता है मुखिया, उसके बाद दूसरा पद होता है सरपंच, और सरपंच के बाद तीसरा पद होता है पैक्स अध्यक्ष, जो कि किसानों से संबंधित है। तो उस पैक्स अध्यक्ष के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूं सर। तो क्यों न केवल एक पद को जोड़ा गया है, क्यों न तीनों पद को जोड़ा जाए, तो चूंकि तीनों अलग अलग गांव से होते हैं। तो अभी शुरुआत हुआ है सरपंच को लेकर। क्यूसीआई ने, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, सरपंच को लेकर शुरू किया है। आप क्यों नहीं सुझाव दें क्यूसीआई को कि वो तीनों को जोड़ें, जैसे आपने विस्तार से समझाया है। आप इसको आगे ले चलिए, और हम सोचते हैं कि आगे बढ़ सकते हैं। प्रोफेसर कन्वर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ये कह रहा था कि हमें एक स्पॉक चाहिए था, तभी हमने सरपंच को चुना। ऐसा नहीं है कि हमें तो गांव में पहुंचना है, हम सबसे तीनों से बात करेंगे तो हो सकता है उसका सोल्यूशन अच्छा सा नहीं निकले। और सरपंच जो है एक गांव का मुखिया है, इलेक्टेड बॉडी है वहां की, तो उसकी जो आवाज है या उसकी जो बात है हर कोई सुनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम आप तीनों से बात नहीं कर सकते। आप लोग अपना इकट्ठा करके सरपंच के माध्यम से एंटर करिए, और फिर हम सब, क्योंकि आप इसलिए बोल रहे होंगे हो सकता है सरपंच किसी और पार्टी का हो, क्योंकि सरपंच के एक ऐप बन गया है, सरपंच का एक ऐप बन गया है। आप सब सरपंच के द्वारा उस ऐप में चले आइए, और हम लोग उसको आगे जोड़ेंगे। प्रोफेसर चट्टराज, अभिजीत चट्टराज। NEP 2020 में एक क्लस्टर का कॉन्सेप्ट है कि
बहुत ज्यादा छोटे छोटे स्कूल्स और बड़े स्कूल एक साथ हैं, और पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल में कोलाबोरेशन हो गांव के लेवल में। अगर पब्लिक स्कूल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल का मैदान हो तो वो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल को लेट आउट करें। उसी तरह अगर प्राइवेट स्कूल के पास ऐसा कोई भी चीज हो। इनफैक्ट अभिजीत जी, हम आपको ये कहना चाहेंगे, आप लोग सबको ये जानकारी देंगे कि XLRI जो आज बहुत बड़ा फेमस इंस्टीट्यूशन है मैनेजमेंट में और HR में, जो जमशेदपुर में है, XLRI, वो शुरू हुआ था हमारे स्कूल से। हमारे स्कूल शाम को बंद रहता था, तो उन लोग शाम को हमारे स्कूल को यूज करने लगे टू स्टार्ट द हायर एजुकेशन इन HR, they used to call it industry relation. पहले XLRI was very famous for industry relation, welfare, employees welfare, और धीमे धीमे वो एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बना जमशेदपुर में कि आज ये वो वर्ल्ड फेमस है। लेकिन शुरुआत हुआ हमारे स्कूल से। तो हम लोग को ये सोचना होगा कि गांव में जो बिल्डिंग बना है, जहां स्कूल चलता है दिन में, how we can convert that into a higher education institution in the evenings for students who are passing out from the local village or the local what should I say, that not punch, they call it the cluster or area. There is a word for that. So what I am trying to say, that what we all need to understand is a very good suggestion which has come, that why should we have to send people outside the village or go very far away. But of course, the first thing is we have to make sure that children don't have to travel a long distance to reach a school. We have to make some parameter, and that is where I look at QCI to work with the government to build those parameters. जैसे हम लोग primary health care बनाए हैं, या we are trying to ensure that health and wellness centers are made in every block, as we call it the block. The cluster of education villages is known as block. तो हर एक ब्लॉक में किस ढंग से हम लोग बना सके schools and colleges, so that लोगों को हायर एजुकेशन भी वहीं पर मिले और उनको ये सुविधा आसानी से मिले, कम से कम पैसे में मिले. Yes, now anybody else wants to come or anybody else wants to, please raise your hand. I am not able to see. आप लोग Sweta ji has raised her hand. Sweta ji, please. Namaste, sirs. Namaste. Sorry, I'm in Australia, so I have joined Australia because I have a lot of we have interest not only US, we have Australia also today with us. Very good, very good. Yes, Sweta ji, please. I am a teacher here and I am working in online education. So like we have a school like जो prep से लेके year 12 के बच्चों को distance education जो like they are dancing full time, they are doing other things, courses, but they have to study till year 12. So why don't we establish such system in villages? Like for higher education, we can contact universities and we can start some programs for students who wants to help their household as well, and they can study as well. So it is a good for them, so they don't need to go far. Like उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे मैं एक छोटे से शहर में थी, उस टाइम हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी बहुत ज्यादा. So now everyone has internet in India. So very good, very good. Sweta ji, हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक प्रपोजल बनाइए इन टर्म्स ऑफ कैसे हो सकता है, जो आपका अनुभव है, आप चला रहे हैं आज, और इस पे क्या खर्चा है, एक मतलब उसका एक प्रपोजल बनाइए और हम लोगों से शेयर कीजिए. और हम लोग चाहेंगे कि क्योंकि हम भी कई इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, हम 4 यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े हैं एज अ विजिटिंग प्रोफेसर, तो हम लोग इसको आगे ले जा सकते हैं अंडर योर लीडरशिप. तो आप, और आजकल आप जैसे बताए हैं, हम लोग घर बैठे काम कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे आप कर रहे हैं.
और हम लोगों को इंडिया में भी इसी ढंग से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, और आपको मालूम है इंडिया इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड in terms of smartphone, population in the country. I mean, in the world. So we have got almost every family in the country, having a smartphone in terms of being able to be connected through internet. So it will be a very good idea. Please share your proposal with us. How do you propose that in a small manner, as a pilot, we can start somewhere, and I will reach out to my institutions which are into academics to consider your proposal. Sure, thank you. Right now, I'm working on starting Hinduism in our schools, and I'm preparing a material and kind of website so that everyone can access to our Hindu scriptures. That's so you can actually share the details on the in the chat box with us, sure. so that we can Thank get in touch with you. So Alok Joshi has conveyed congratulations to you. He has clapped on your proposal. Thank you, sir. Yes, I can see Akash. No, Avinash Rakhi. Please come, unmute and come. Please unmute and come. वैसे हम लोग का टाइम अप हो रहा है. Please unmute and come. We'll take last question. Go ahead. Unmute करके आइए. अविनाश जी. हेलो, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे आज मिला है. मैं देख रहा हूँ ऑल इंडिया कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन का मैं महाराष्ट्र स्टेट का सेक्रेटरी हूँ. बहुत खूब. ग्रुप पे जो मैसेज आया था मैंने ज्वाइन किया है. एक्चुअली मेरा फर्म है अजिंक्य एजुकेशन करके. आप सब जो बातें कर रहे हैं वो सब बहुत अच्छे हो रहे हैं. हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम विचार विमर्श कर रहे हैं. न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं है. अभी आगे जाके उसके रिजल्ट आने में देर लगेगा. फिलहाल तो अभी एज अ काउंसिलर मैं आपसे बात करना चाहूंगा. जबकि हम जिनके लिए ये सब काम कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, एजुकेशन फील्ड जो आज तक अपना अनुभव रहा है. अभी मेरी उम्र भी 45 है. 45 इयर्स का मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है. आप भी महानुभव है. आपकी भी उम्र के हिसाब से आज तक हमने जो देखा है वो एजुकेशन सिस्टम अलग था. आगे जाके जो चैलेंजेस बच्चों के लिए आने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा विचार होना चाहिए. जबकि अभी हम देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6 स्टैंडर्ड के अबव बच्चों को एक टेक्निकल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ रहा है. एक फॉरेन लैंग्वेज लेनी पड़ेगी. जरा हम ये सोचेंगे कि ये बच्चों का दिमाग है, उसमें हम क्या-क्या डाल सकते हैं. जबकि बच्चों की कैपेसिटी है कि भी या नहीं, इसके बारे में भी थोड़ा-सा विचार विमर्श होना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ. नहीं, बिल्कुल. आप उपभोक्ता आंदोलन से जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं 40 साल से. हम शुरुआत जुड़े थे 83 में. वेरी गुड. आई एम 73 years old now and still struggling to empower the consumers. ताकि कंज्यूमर्स को कैसे सशक्तिकरण किया जाए, इस पे अभी भी चुनौती है. हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम केवल एक ही चीज कह सकते हैं, बच्चों को कम मत समझिए. हमको याद है हमारे बचपन में हमारे स्कूल में लैटिन पढ़ाया जाता था. चॉइस था फ्रेंच, जर्मन, लेकिन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. मतलब ये नहीं कि आपको वो सब्जेक्ट में पास करना होगा टू गो टू द नेक्स्ट क्लास. वो इलेक्टिव सब्जेक्ट था. लेकिन बच्चों के अंदर में जो कैपेसिटी है वो बहुत है. उनको कम मत समझिए. उनको लेकिन विकल्प दीजिए, उनको चॉइस दीजिए. उनको वो करने को दीजिए जो वो करना चाह रहा है. उनको जबरदस्ती वो मत करवाइए जो वो करना नहीं चाह रहा है. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में हम देख रहे हैं कि बच्चों को हम लोग फोर्स करते हैं कि आपको नहीं बायोलॉजी लेना होगा, आपको डॉक्टर बनना ही होगा. अरे क्यों डॉक्टर बनेगा यार? वो डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा, आप जबरदस्ती उसको बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, उसको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, उसको फिजिक्स पढ़ा रहे हो. वो और कोई सब्जेक्ट्स पढ़ना चाह रहे हैं. तो आप उनके ऊपर छोड़िए सोचने के लिए. हर चीज केवल पेरेंट्स को नहीं फोर्स करना चाहिए, लेकिन एप्टीट्यूड देखते हुए, यदि वो मैथमेटिक्स में अच्छा है,
वो फिजिक्स में अच्छे हैं, तो नेचुरली उसको उत्साह दीजिए इंजीनियर बनने के लिए। कोई बायोलॉजी में अच्छा है, उसको उत्साह दीजिए कि वो डॉक्टर बने। लेकिन ये कता मत कीजिए कि उसको जबरदस्ती वो सब्जेक्ट पढ़ाइए जो वो नहीं पढ़ना चाहता। ये बहुत गलत हो। बिल्कुल सही सर। और उसी को हम लोग को बदलाव देना होगा, और उसके लिए हम केवल आपको एक ही सुझाव दे सकते हैं। हम जो सीखे हैं विदेश से और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, कि हर एक गांव-गांव में काउंसलिंग सेंटर्स होनी चाहिए। जी। जो शिक्षित है, जो जागरूक है, वो उसको काउंसलिंग के स्किल सेट देना चाहिए अनिवार्य रूप से। और हर एक उस ढंग के लोगों को काउंसलिंग सेंटर्स खोलना चाहिए, जैसे हम लोग का सीएसएस सेंटर्स हैं, सिटीजन सर्विस सेंटर जो खोला गया है। लेकिन सिटीजन सर्विस सेंटर जो है, वहां जो लोग बैठते हैं उनके स्किल क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, जहां पर क्यूसीआई कैन प्ले अ रोल। जितना सिटीजन सेंट्रिक सर्विस सेंटर्स हैं इंडिया में, उसको जो चला रहे हैं उनके पास वो स्किल है कि नहीं लोगों को काउंसिल करने के लिए, वो जानना जरूरी है। क्योंकि आप केवल किसी को कोई क्वालिफाइड है आप उसको बैठा दिए और उनके पास वो हुनर नहीं है, उनके पास दोबारा कोई नहीं आएगा सुनने के लिए उनको। जी, ये बहुत जरूरी है। क्या श्वेता जी आप मानते हैं इस बात को? यस सर। सर मेरा बेटा 11 साल का है, वो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न हुआ है। उसे भगवत गीता पढ़नी है, तो मैं उसको संस्कृत सिखा रही हूँ आजकल। तो मैंने उसके ऊपर प्रेशर नहीं किया, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, नो। ही वांट्स टू बिकम अ सेंट। He said, I wanted to become like any Guruji. I wanted to learn. I said, sure, whatever you want, you can do. It's your life. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम सोचते हैं कि हमारे देश में हमारे जो लीडर्स हैं अभी, वो लोग भी यही चाह रहा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सोच कर वो लोग लाए हैं। हम सोचते हैं कि उनका जो मंशा है, उनका जो सोच है वो यही है लेकिन उसको जल्दी से जल्दी पालन करवाना चाहिए, जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। ये नहीं कि वो टाइम लगेगा, समय लगेंगे, नहीं। क्यों समय लगेंगे? इसको फर्स्ट ट्रैक में लाना चाहिए, ये जरूरी है। यस, सोनू जी। सर मैं कुछ कहना चाहूंगी सर। यस यस यस, प्लीज प्लीज। अरे यू आर एन इम्पोर्टेंट पर्सन, प्लीज। हमारी आवाज जा रही है? एक मिनट सोनू जी, एक मिनट। जय हिंद, आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ जो रही है। एजुकेशन सिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें सर एक चीज बहुत अच्छा है कि स्किल डेवलपमेंट की ओर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और पहले जो हम लोग पढ़ते थे उसमें आर्ट्स स्ट्रीम अलग थी, कॉमर्स अलग थी, साइंस अलग था। लेकिन अभी क्या है, मेजर सिस्टम कर दिया है। उसमें आप आर्ट्स के साथ कॉमर्स को घुसा सकते हैं, कॉमर्स के साथ साइंस को रख सकते हैं एक पेपर, और साइंस के साथ आर्ट्स का एक पेपर। जैसे हमारे समय में सर, या आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था कि जो बच्चे आर्ट्स पढ़ रहे हैं वो मैथ्स तो पढ़ते थे, बायोलॉजी पढ़े हैं। लेकिन अब साइंस के साथ क्या है सर, हिस्ट्री पढ़ना पड़ा है बच्चों को, एक पेपर ऑप्शनल कर दिया है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो वैसे में बच्चों को चॉइस पता चल जा रहा है और बच्चे अपनी चॉइस के मुताबिक आगे बढ़े हैं। और आर्ट्स अलग, साइंस अलग, कॉमर्स अलग, ऐसा नहीं किया है। अब मेजर सिस्टम कर दिया है, जो ऑनर्स के पेपर है वो मेजर पेपर कर दिया है सर। उसमें आप एक मेजर पेपर लेके बाकी सारे पेपर को आप पढ़ सकते हैं। नॉट साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ऐसा कोई मैटर नहीं है अब रहा। ये न्यू एजुकेशन सिस्टम है। और अभी झारखंड के सारे विश्वविद्यालय में सर ये मेजर कोर्स लागू कर दिया गया है। बट और स्टेट के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, बट छत्तीसगढ़ में भी मैंने सुना है और बिहार में भी ये लागू हो गया है। बाकी महाराष्ट्र की क्या स्थिति है मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन झारखंड में सारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छी तरह से लागू हो चुका है झारखंड के सारे विश्वविद्यालय में। और बच्चे स्किल की ओर बहुत फोकस किया है गवर्नमेंट की ओर से, और बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। जैसे पहले सर हमारे समय में क्या था, होम साइंस एक पेपर होता था जो सिर्फ फीमेल के लिए होता था। लेकिन अब ये होम साइंस फीमेल और स्टिचिंग एक पेपर रख दिया है जिसमें मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे। तो अच्छा स्किल, जो नीडी बच्चे हैं वो बहुत जल्दी अपना स्किल पूरा करके सर और अर्न करने लग रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम हो गया एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। इनफैक्ट झारखंड ये जो शुरुआत किया है, बधाई का पात्र है। और हम सोचते हैं कि आपकी लीडरशिप में हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। सोनू जी आइए, अनम्यूट करके आइए। सोनू जी अनम्यूट होकर आइए, आप हैं? हाँ सर, हमारी आवाज जा रही है विजन सर?
सर आपका मार्गदर्शन सर हमेशा मैं सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मगर आपने सर सही बातें बताई। और मैं सचमुच में मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद उदय मन्ना सर को दूंगा, क्योंकि अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ये नए टूल्स नहीं मिले होते, तो मुझे नहीं पता ये सब प्रत्येक सप्ताह इतने सारे विद्वानों को मैं सुन पाता और इतनी सारी बातों को मैं जान पाता। तो बिजॉन सर मेरे पास कोई सवाल नहीं थे, आपके बात से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने जो लास्ट में कहा कि जो गार्जियन करना देना चाहते हैं, और वो जो दबाव वाली बात आपने जो बताई, वो सचमुच में आपने सही बात बताई कि अगर कोई बच्चा अगर अन्य किसी भी विषय पर वो जिस क्षेत्र में करना चाहे, अगर एक बिरहा से संबंधित वो अगर मतलब ज्ञानी हो जाता है, तो मुझे लगता है कि आरजेएस परिवार जैसा प्लेटफॉर्म अगर उससे मिलता है, तो वो नए वक्तव्य के साथ अपनी बात रख पाएगा और नई नई बातों को हम तक पहुंचा पाएगा, जो हमसे अछूता है। तो ये सर बहुत बड़ी बात आपने बताई, इसके लिए सर स्पर्श और उदय मन्ना सर को भी धन्यवाद। Thank you very much. Thank you very much. Okay, now that there is no other questions to be asked by anybody and I don't see any hands raised, हम अब रिक्वेस्ट करेंगे हमारे बहुत वरिष्ठ परिवार के सदस्य हैं श्री प्रफुल्ल डी सेठ, जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं कई सालों से। हम उनको 2010 से जानते हैं, उसके पहले भी हम मिले हैं, आपको 2000 से मिले हैं। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम हम लोग मिले जब हम सदस्य थे मशलगर कमिटी में, और वो आते थे वहाँ ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसके वो प्रेसिडेंट थे तो प्रफुल्ल जी आजकल हमारे वाइस चेयरमैन है पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव ऑफ इंडिया फाउंडेशन, और वो बहुत ही सक्रिय रूप से आरजेएस परिवार को मदद कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो करते रहेंगे आगे भी। और वो आज हम लोग को वोट ऑफ थैंक्स का मतलब जिम्मेदारी उनको दिया गया है। प्रफुल्ल डी सेठ, आप प्लीज आइए। Thank you, Bijanda. Thank you for your kind words. Before I propose the vote of thanks, I want to say one thing, that there has been a beautiful documentary which has just come out, which is on the founder and convener of our organization, RJS, and it's on Shri Uday Manna. I was quite impressed to see that, frankly. I saw it yesterday and I immediately penned down my thoughts, Udayji. But I would like to encourage all of you to see that documentary if you have not seen it. It gives the total sense of the last 9 years of hard work that has been put by Uday Manna ji, and you will really enjoy looking at it. When I wrote this to Uday ji, he said the second part is coming on August 8th. So you must see this first part and enjoy the second part later. So all the success to Uday Manna in years to come for fulfilling his wish of Amrit Kal Ka Sakaratmak Bharat Uday series program till 2047. Now, today's topic was very, very interesting, and we all have enjoyed it with all the seriousness that we have participated in the discussion on educational landscape in India is calling for a change. It's very, very difficult to summarize, but I might try in maybe 3 or 4 points and then go a little bit into the details. First of all, why change? Why it is looking for a change? And I think that's the right question today, because we are calling for a change. And I think the first and foremost was that we are weighed down by an outdated curriculum with poor quality. And as someone rightly said, the emphasis on quality has gone down and quantity has gone up. And we can see, and Varinderji has rightly mentioned, that we have to cater to need of large number of people in India. But I think we can't let the quality down. So I think all the efforts must be made to preserve and upgrade the quality. Number two, as if we feel that our children are, it's not enough for them to go to school. By the time they come home, we burden them with coaching classes. So where is the time for them to spend on sports
and extracurricular activities. Third thing, and it's a rather serious thing, and this is something for Abhijit ji to think about it also, is that at 95% mark does not guarantee that the jobs are ready for them. First of all, jobs are there, but 95% marks do not guarantee this. They invariably fail in the job interviews also, as Vijanda mentioned. So many people came for the interview and failed in the interview. They must be highly qualified people. And fourthly, the top scorers don't make the top leaders. In fact, if you look at some of their life, you find that most successful people were worst performers in the school. I think Einstein has rightly said that education is not the learning of facts. Oh, mugging or rotting, whatever you're calling, it's not going to take care of it. I think the training of the mind is to think. And we have to go in that direction, Abhijit ji, where we make people to think more than just do the routine. Now, this program started on a very beautiful note, I thought, from Pushkar Balaji, when she told us about Tamasoma Jyotirgamaya, Asatoma Sargamaya, from Brihadaranya Upanishad. And I think that was carried further by Bijanda when he said spiritualism has a place in education. And I think we must give proper emphasis to spiritualism. And then Beenaji said that the program on 21st is going to be on Mahavir, the values of Mahavir. So it's such a nice feeling that we are putting these values in our education system. Abhijit ji brought out also this, and he said, know thyself. Our Surinder ji always mentions this. Apne ko jano, apne ko pehchano. And today Abhijit ji gave a very nice definition of Diksha Aram. And I think these are the things that we need to bring into it. Of course, he did say a lot of things about the skill development index and that health and income is all dependent on your good education. Professor Kanwarji very nicely spoke, and thank you, sir, for taking time out when you are traveling. And you were stable at one place so that we could hear you very well, because many a times what happens that the person is in the car and invariably the signal comes down, but you were there. Thanks a lot. You spent a lot of time on the national education policy and quality of the education system in government sector. But I think more important thing was this whole thing about the migration, which is now taking place. Better students walk away from India and go abroad. How do we do this part? And I think that is something where you have to help us through the QCI. Also, your faculty, sorry. Calling emergency services. Your faculty approach, criteria for improving the faculty also was brought out very well. You see, skills have to be improved, attitude also have to be improved. And we have to also see that our students come out as better decision makers, communicators, managers, and they must continue as lifelong learners. Look at medical. Once you got your degree and you are out, you are knowledgeable for life. I think that system has to change. Accreditation has to apply to medicines also, and they also must go through accreditation process regularly. But I think most important part was the discussion. And I know when Bijanda is there, he will give everybody a chance to ask question. And I think he is a very patient person. I know we are running slightly late, but very, very good questions came out. Ramaiah ji talked about the quality and quantity of education. And also, he also talked about the strengthening of the basic education. These are the things I think we must. I studied in United States in 61. And what a difference I found when I went there, because my basic education was in US. And not only learning, but learning some basic values also along with that.
Alok Joshi ji touched upon the involvement of parents. And I think wherever parents are involved, we have seen that the scenario is much better. So I think but if the parents have to be educated, first of all, then only they can coach their children. The thirdly is Muhammad Ishaq Khan. He always makes some very good points which are grounded very well. And Ishaq Khan talked about we must change this whole concept from commercialism to professionalism, if I am not mistaken. ये कमर्शियलिज्म जो हो रहा है उसको हमें प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले जाना है. और we also have to see that the distance, I know myself here in Gujarat, that people in the high capacity in the government, they have money, they have funds, but they don't have money to spend to create a small bridge so that the students can take a shortcut to go to school. They continue going still on somebody's scooter to school, maybe 15 to 20 kilometers every day. This sort of thing should not happen. Pramil talked about, again, all these subjects which need to be collated and maybe have another session. Sridhar Reddy ji talked about higher values, and also Dharmendra ji, I think, raised some very good points again, where rural area, education in rural area, that needs to be improved. And how can we get local leaders to participate in that through QCI? So thank you very much. All in all, it's a very good program. Thank you all for joining, and please join us in our next program. Thank you, Prabhu bhai. Thank you very much. You know, I must admire the way you have summarized. And I also want to take this opportunity before I hand over the mic to our very active, coordinator, Uday Manna ji, who is always up, in terms of taking us forward. So before I hand over the mic to Uday Manna ji to close the session for today, firstly, I want to take the opportunity to thank Professor Dr. Virender Singh Kanwar ji and Dr. Professor Abhijit Chattoraj for taking time and spending complete time with us. I mean, amazing. Such busy people, and devoting so much of time to us. I feel very honored and privileged that you all gave इतना समय दिया आप लोग सारे questions लिए सबको सुने patiently, and especially I want to thank all my friends who have joined today, because हम तो always ये कोशिश करते हैं कि maximum लोग जुड़े ताकि maximum लोगों को हम लोग सुन सके, उनके inputs ले सके, उनका सुझाव को आगे ले जा सके, और कैसे हम लोग भारत में एक positive thinking लाए in terms of moving forward, because that's our mission. Apart from my personal mission of working towards the rights of the consumers, we also join hands with institutions like RJS Positive Media, led by Uday Manna ji, to collaborate. So we always look for collaboration, with good institutions to take us forward. I feel very delighted that all our overseas participants are still there. They have not left us, and I can still see that we have got around almost 30 people with us still listening to us till the end. So thank you very much. Please keep joining us, supporting us, and taking our mission forward. I want to take this opportunity to thank RJS Positive Media to have given me this opportunity to chair this session and coordinate it. So thank you very much. I would like to now hand over the mic to none other but our great friend Uday Manna ji, a journalist of repute, a person who has been working relentlessly in reaching out to the citizens on creating content which are of intellectual kind of a stature. So Uday Manna ji, आपके लिए माइक हाजिर है. उदय मन्ना जी. जय हिंद सर. जय हिंद. जितनी भी तारीफ बिजोंदा की जाए उतना कम है. मोटिवेट करते रहते हैं, और इसी मोटिवेशन का दिशा से भटकने की जगह हम लोग एक सही दिशा पर जा रहे हैं.
और देश विदेश के लोग भारत में क्या हो रहा है उसको देखने की जो जिज्ञासा है वो यहाँ लक्षित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से और भी जगह से लोग जुड़ते हैं और बहुत ही अपना कीमती समय, क्योंकि हम लोग तो अभी दिन में हैं लेकिन वो लोग रात में जगकर अगर इसको समर्थन कर रहे हैं तो चूंकि एक जिद है इतिहास बनाने की, तो ये इतिहास इस पीढ़ी का बन रहा है। तो आप अगर जुड़ रहे हैं तो वो पुस्तकों के अंदर दर्ज करने की हम लोगों की पूरी इच्छा है। तो आप लोग अपने कमेंट्स जो हैं वो बिजोंदा को भी भेज सकते हैं या प्रफुल्ल भाई को भेज सकते हैं या पायल जी है वो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, उनको भी चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो पुस्तकों में हम लोग आपकी बातों को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिस तरह से QCI ने जो इनिशिएटिव लिया है इस मंच पर आकर, जिस तरह से बताया गया कि सरपंच संवाद का एक बहुत ही अच्छा, ये तो गांव-गांव पहुंचने के लिए, तो क्यों ना आरजेएस फैमिली जो है इसको इम्प्लीमेंट करे। और ये धर्मेंद्र कुमार जी जुड़े थे, लेकिन वो पैक्स रत्नाड़ पंचायत भोजपुर जिला बिहार के हैं और बच्चों से जुड़े हैं, वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। और वहाँ समस्या ये आ रही है कि डिकोडिंग हो जा रहे हैं स्कूल। रत्नाड़ पंचायत का एक बहुत पुराना स्कूल था लेकिन उसे डिकोडिंग कर दिया गया है उसका, क्योंकि उसमें जो अर्हताएं होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होती है, उसमें कमी थी। लेकिन वो चीजें नहीं हो पाने के चलते उन बच्चों को बहुत दूर कोडिंग वाले स्कूल में जाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें गांव में हो रही हैं लेकिन जानकारी का अभाव होने की वजह से मुझे ये वीडियो भी देखने को मिला है। तो ये QCI का जो सरपंच संवाद है इसको लेकर मुझे लगता है कि शायद गांव के लोग भी इंटरेस्ट लेंगे और रत्नाड़ पंचायत के गांव में QCI पहुंच जाएगा, जैसा कि अभी इच्छा जाहिर की गई थी गांव-गांव पहुंचने की। तो आरजेएस की तरफ से अगर आज के प्रोग्राम में जब हम लोग कोटि-कोटि नमन कर रहे हैं बाबा साहब आम्बेडकर को, आज के 14 अप्रैल है और पूरे दुनिया में उनको माना जाता है, शिक्षित बनो ऐसा उनका नारा था। तो क्यों ना आज हम लोग एक संकल्प लें कि QCI के सरपंच लंच के कार्यक्रम को हम लोग समर्थन करें और मीडिया के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाने का अभियान चलाएं। इसीलिए गांव-गांव तक पहुंचाने का बीना जैन जी की भी इच्छा है, युवाओं को जोड़ने का। तो आज युवा जुड़े भी, जमशेदपुर से लव कुमार जी जुड़े जो आरजेएस एडमिन के बच्चे हैं और भी तमाम लोग जुड़े हैं गांव से, लेकिन हम लोग और ज्यादा गांव से जोड़ने का प्रयास करेंगे और गांव की यात्राएं करेंगे। जैसे अभी 10 दिन हम लोग गुजरात गए थे तो वहां पर ये पुस्तक जो है गुजरात की लाइब्रेरीज में और इंस्टीट्यूशंस में हम लोग प्रदान करके आए, भेंट करते हैं। तो आरजेसियंस जो है अगला जो है उसको ग्रंथ का दर्जा दिया गया है। तीसरा पार्ट जो है वो आने वाला है, 11 अगस्त को आ जाएगा। तो आप लोग समर्थन कीजिए और आप सभी लोग जितने लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा उदय मन्ना जी, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो सेठ साहब ने मतलब बताए हम लोगों को वीडियो के बारे में, तो लोग वो वीडियो को एक्सेस करना चाहता है, तो ये YouTube में वो वीडियो मिलेगा तो जी, YouTube में बिल्कुल सर, ये चैट बॉक्स में भी आसानी से डाल दिया गया है। अभी चैट बॉक्स ऑन है तो वहां से आप कॉपी कर ले सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरा ये कि किसी से भी संपर्क करेंगे, चाहे प्रफुल्ल भाई से संपर्क करें, पायल जी से संपर्क करें या बिजोंदा से संपर्क करें, मुझे संपर्क करें। मेरा तो नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के सभी चैनलों पर ये उपलब्ध हो जाएगा। अभी ये उदय मन्ना फेसबुक लाइव पे भी उपलब्ध है। ये आपका जो सारा कार्यक्रम जो है वो ट्विन लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पे। वो आपको डॉक्यूमेंट्री भी मिल जाएगी जो कि एक ट्रेलर कहा जा रहा है। असली फिल्म जो है वो 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का समारोह जब होगा, एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की योजना बन रही है, वो सब आपके सामने आएगा। लेकिन ये फिल्म आप देख सकते हैं, फिल्म अच्छी या जैसी भी है, प्रयास किया गया है। तो इस प्रयास में आप अपनी आहुति देने के लिए अगर आगे आते हैं तो आपका बहुत बड़ा स्वागत होगा, क्योंकि इतिहास सकारात्मक भारत का आरजेएस की ओर से बनाने का संकल्प लिया गया है 2047 तक। मुझे एक बात की तकलीफ जरूर हुई जब मैं बिजोंदा ने एक बहुत ही मार्मिक शब्द कहा। 2047 ज्यादा दिन नहीं है, समय गुजरता जा रहा है। हमारी इच्छा है कि ये जो पिलर्स हैं आरजेएस के, आप सभी जानते हैं, आप लोगों के सामने ही इसका इतिहास गढ़ते हुए
पीएमओ तक ये जानकारी पहुंचाते हुए हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए चाहे जितना भी तन मन धन आरजेसियंस का लग जाए तो लग जाए, लेकिन ये भारत के इतिहास में शामिल होने वाली पीढ़ियों का ये इतिहास बनेगा। जितने भी चीफ गेस्ट आ रहे हैं, जो बैनर आ रहा है, ये सब किताब के अंदर आ जाएगा। और ये जो बातें हुई हैं वो किताब के अंदर नई पीढ़ी को हम लोग पहुंचाएंगे। आपके अलग अलग राज्यों में यात्राएं भी करते हैं, विदेश की यात्रा भी तीसरी किताब को लेकर जाना है। ये तीसरा 11 अगस्त को रिलीज हो जाएगी, बहुत ग्रैंड गाला फंक्शन होने वाला है। तो वो किताब लेकर हम लोग किसी न किसी कंट्री में जाएंगे। तो ये आप लोगों की चीज है, आपको ही समर्पित है। और भगवत गीता की भी चर्चा हुई, तो उससे भी प्रेरणा हम लोग लेते हैं। हम लोग आरजेएस का शुरुआत जो है किसी श्लोक से और सुविचार से कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रेरणा जो है भगवत गीता से ही मिला है, और उसको लेकर हम लोग रमजान को भी समर्पित किए एक प्रोग्राम, अलग अलग महापुरुषों को समर्पित करते हैं। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में किसी महापुरुष का आप नाम लिखेंगे, स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखेंगे, तो वो आ जाएगा। आप चाहे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया बिजोन कुमार मिश्रा लिखेंगे तो बिजोन कुमार मिश्रा जी की सारी वीडियो आ जाएगी। प्रफुल्ल डी शेठ लिखेंगे तो उनकी पूरी वीडियो, प्रफुल्ल डी शेठ और रंजन बेन जी लिखेंगे तो आ जाएगी। तो ये एक नेटवर्क जो है आरजेएस ने आपके लिए पैदा किया है। आज का प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव, और ये पहला प्रोग्राम है जो फेसबुक पे भी लाइव हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर हम लोग आ रहे हैं, और डेली प्रसारण जो है वो 9 अप्रैल को 9 संवत्सर से किया गया था। युगादि, गुड़ी पड़वा, ये सारे नए त्योहार, बैसाखी, उसके उपलक्ष्य में ये शुरू कर दिया गया है। डेली प्रसारण हम लोग करने वाले हैं। तबीयत खराब होने की स्थिति से ये गैप आ गया है, लेकिन फिर से वो डेली प्रसारण जो है आपको 7 दिन 7 बार ये सोशल मीडिया पे मिलेगा। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे आप ये देख सकते हैं। मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो आज पार्टिसिपेंट्स थे, जो चीफ गेस्ट थे, कीनोट स्पीकर थे, जो वेलकम किए, जो वोट ऑफ थैंक्स किए, जो जिन्होंने इसको ओपनिंग किया, और जो पुष्कर बालाजी ने जिस तरह से शुरुआत की है। और द अवेयर कंज्यूमर का मैं बहुत ही आभारी हूं कि लगातार हर महीने एक कार्यक्रम जो मैगजीन निकलता है उसके टॉपिक को करने का एक अवसर हमें प्रदान किया जाता है। तो ऐसे हम लोग 2047 तक चलेंगे, लेकिन इसके लिए और लोगों को भी आगे आने की, कम्युनिकेट करने की जरूरत है। इतिहास में शामिल तभी होंगे जब आप सभी इसे आंदोलन को गति देंगे, समर्थन दें। मैं उदय कुमार मन्ना आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगले रविवार, हर रविवार आरजेएस वेबिनार 11 बजे से होता है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे, यूट्यूब पे लाइव होता है और फेसबुक पे लाइव होता है। तो आप लोग ये अगला कार्यक्रम जो है साइंटिफिक परसेप्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ महावीर जयंती है, उनके उपलक्ष्य में हम लोग सत्य और अहिंसा के पुजारी के आदर्शों पर चलने के लिए, संकल्प लेने के लिए ये कार्यक्रम जो है उज्जवल विमेंस एसोसिएशन के सौजन्य से कर रहे हैं। और हम लोग पुस्तक में आपके परिवार के दिवंगत आत्माओं का भी प्रकाशित करते हैं। इसे भी आप ध्यान रखें कि अपने परिवार के दिवंगत आत्माओं को अगले ग्रंथ में भी शामिल करें। ग्रंथ इसीलिए दिया गया है कि अतीत के जो लोग हैं उनको भी हम लोग सम्मान करते हैं, और भावी पीढ़ी का भी इसमें इतिहास होता है, और वर्तमान पीढ़ी का तो रहता ही है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीबॉडी। टेक्निकल टीम का भी बहुत बहुत आभार, वो भी बहुत मेहनत से इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं। अब सकारात्मक सॉन्ग जो के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। थैंक यू विजयंदा। थैंक यू। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।